everyone. We welcome you back to the season 3 of Know Your Alumni. In today's episode, we have with us Mr. Divyanshu Pandey. He is a B.Tech 2018 graduate from NIFTEM and now he is currently working as techno commercial manager in Access Development firm in Access Development Services. Sir, I welcome you. Thank you, Saloni, for inviting me. And Yes. it's always pleasure to be in touch with any NIFTEMite. And I appreciate this initiative that you people are taking ahead. So it's great pleasure for me to be here. Yes, thank you for giving us the And time. namaskar to every viewer who are watching us live. Yes. Yes. Yes, sir. So, sir, starting with NIFTEM days. So, remembering the college days is always nostalgic. So, how you see your college days was, and how has NIFTEM helped you? Okay. So I must say here, in what form you see me today, and where I am today, and how I am today. So in that, there is a major contribution of me being there at NIFTEM. So it's helped me a lot from every perspective. It's maybe from making good friends, making some good networks, and also from other extracurricular activities that I have been in part of those activities. So yeah, it's very great time being there in NIFTEM, and it's always for everyone being there in their college. It's a great time. So even you people also might have enjoying the Yes, sir. time there. These are the golden days, as we say. Yes. So, Yes. when every student enters into a college, he or she looks up to the societies they want to join or to participate it. But you, on the other hand, founded a society, Vyaktitva, the Personality Development Society of NIFTEM. So, what was your idea, motto behind it, and what it all takes to start the society from scratch? Okay. So here I must acknowledge it's not only me that started this society. So there are many junior, senior, as well as faculty member who involved this formation. So, like founding this Vyaktitva, the Personality Development Society. So there was a small incident which happened with me, and that itself in NIFTEM. So I'll just share that incident so you can correlate with this idea of founding this society. So during we joined NIFTEM and there was a induction program. Likewise, you also might have attended induction Yes, program in initial days. So there was a guest lecture, and outsider, some person has came for some personality development related lecture and workshop. He explained, like he went on to explaining about personality development, this and that for I think more than 1 hour. And at last he asked us to ask our queries if we have some queries. So many of my friends asked their own queries, and then I, coming from a tier 3 city, and that time I was not, and even then there are more than 50-60% my colleagues or mates, they are not very good in English, and we are fearing to speak, and also there is problem for us to even understand those who listening those fluent speakers. So I stood up in the seminar hall and I asked, कि भाई, my question was, sir, you did whatever 1 hour lecture and I couldn't even understand 20% of what you were telling. So सर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा समझने में भी और बोलने में भी इशू हो रही है. एंड ही रिप्लाइड विद वेरी वाइड रिप्लाई कि भाई आप इसके लिए तो अपनी आई डोंट नो मातृभाषा बोला या माँ को तो चेंज नहीं कर सकते, समथिंग ही टोल्ड, एंड दैट हर्ट मी अ लॉट. Okay. So and then during those days in NIFTEM used to have 42 societies, and those societies are most of those society used to be inactive apart from few cultural and event committee, 5-6 are active. So those days there is an idea came into that कि हम NIFTEM जिमखाना बनाते हैं, and in that they propose कि भाई 6-7 सोसाइटियाँ ही होनी चाहिए. तो and in that is one thing, and apart from that जब उनका वो जो इंडक्शन वाला रिप्लाई था, and we really found कि भाई थोड़ा सा हमें इंग्लिश वगैरह में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. then I
थॉट कि क्यों ना हम कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चालू करवाएं कॉलेज में. Okay. And I went up to CRD and some other faculties कि भाई कुछ Hmm. करवाते हैं ऐसा, and I Hmm. couldn't found any way to organize this. Then मुझे finally पता ऐसा लगा कि मुझे वाइस चांसलर से ही मिलना पड़ेगा. And then I took an appointment to that then found Vice Chancellor Dr. Ajit Kumar sir, and I got fortunately I got appointment. I went in his cabin and I explained each and everything. And literally while explaining, I was just thinking that thought जो उसने reply दिया था मेरे induction के time में, and I literally cried in front of him. जो Okay. explain करते करते, and then he told कि भाई इसमें रोने की क्या बात है, you are taking very great initiative, and Hmm. it's not only you. And he also shared his story कि भाई मेरे टाइम में भी मैं भी ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड से Hmm. आया था, and today you are seeing me here. So it's the beginning. So in that way he तो उन्होंने क्या बोला कि it's very great initiative दिव्यांशु, और आप क्या करो, but if you want you can hire some like outsider agencies, and then Hmm. हम जो facility होंगे classroom projectors ये वो provide कर सकते हैं. And then I came out from the meeting, and then I कुछ दोस्तों को मिलाया, 20-25 लोग बने, and then I connected through Hindustan Times. There is a sister concern of English Mate. Okay. तो हमने उनसे उनके हायर मैनेजमेंट को बुलाया, एंड मीटिंग वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन कॉलेज, एंड देन फाइनली वर्कआउट हुआ एंड क्लासेस चालू हुए. तो दैट वाज द बेसिक थिंग. एंड देन मुझे यही लगा, एंड देन दिस जिमखाना केम, तो मुझे लगा एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हर सोसाइटी के लिए देयर इज अ फंड, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स देयर आर फंड एंड ये वो, तो क्यों नहीं इसके लिए हम क्यों अपने पॉकेट से खर्च करें. Yes, सो द sir. आइडिया वाज दैट, एंड आल्सो आई वाज, मतलब मेरे मन में ऐसा था कि मुझे टेडेक्स करवाना है कॉलेज में. Okay. तो आई वाज जस्ट, मतलब उसका एक वो फाउंडेशन बना रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक मैं पास आउट हो गया. एंड इवन फ्रॉम आउटसाइड आई एम मोटिवेटिंग सो मेनी पीपल, माय जूनियर्स, कि भाई कुछ तो कुछ कराओ. तो स्टिल आई एम वेटिंग टू We will सी definitely take दोस forward डेज your टू. idea. We will definitely take forward your यस. idea ahead. That was a great lesson, sir. So so there are many things that happen in the NIFTEM has now like bit of a change. So what was NIFTEM at your time, the WAP schedule, or any other thing that you want to add? You see, WAP is very good program, and because of WAP only you can see me. I like I'm guessing that there will be a question that why you joined this organization from Coke and this. तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना, एक कि भाई मुझे कुछ करना है ऐसी, तो वो वैप से ही मुझे आया. तो ड्यूरिंग आवर टाइम like WAP used to be in every semester, so we have to go for 15 days to villages and then be there. Though there are several क्या कहते हैं उसको, मतलब चेंजेज होनी थी वैप में, कि जो हम जाते थे वो भी उतना इफेक्टिव नहीं था. बट हमारे लिए ऐसा हो गया कि दैट हमने थोड़ा सा गांव को जाना, प्रॉब्लम को जाना, बट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था दैट हैज टू बी सम मोर इफेक्टिव, तो उतना इफेक्टिव नहीं था. बट यस, दैट गेव अस वेरी गुड आइडिया अबाउट लाइक क्या हमारा रूरल. और वैसे भी मेरे लिए तो कोई नया नहीं था कि मी बीइंग फ्रॉम 3 tier सिटी, और तो गांव से भी है, और मोस्टली माय 50-60% मेट्स और लाइक दैट ओनली. बट उस तरीके से हम जाके गांव में नहीं सोचते थे जो वैप ने हमें सिखाया. तो इट वाज ग्रेट प्रोग्राम. आज के दिनों में व्हाट आई फाउंड विथ यू पीपल एंड सम अदर, कि ऐसा कुछ हुआ है कि भाई एक ही महीने के लिए वन गो में करवाएंगे. सो आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग, बट इट वाज गुड व्हाइल वी वर देयर. एंड अगर एक महीने में भी लोग कराते हैं, देन इट शुड बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड थिंग. इट्स नॉट जस्ट वी आर विजिटिंग एंड फोटो खिंचवा के आ गए. So that is not a good idea, what I say, just for a formality. Yes. Yeah, I agree. It is a great initiative, and I hope it help us with it will also help us in the future. My next question is how did you went from NIFTEM to Coca-Cola, like a great MNC in India and as well as in the world? How did that happen? Okay, so see, I don't directly go to the Coca-Cola. So in between there are some other company Journey. also where I joined. So yes.
So I got placement in a company called Mia and J Food Store, which is Gurgaon-based startup in bakery and confectionery. So I joined Mia and J, and we three were there from my batch, and we joined there, and we worked for a very brief of time of 4 or 5 months, 4 months more precisely. And and after that I just left that job and I waited for कि भाई कुछ और अच्छा देखते हैं, and I think I made a 2-3 month gap in between after resigning that job, and then I एक दिन सडनली मेरे पास कहीं से कुछ कॉल आया, एंड दैट टू इज मतलब निफ्टम के ही रेफरेंस से आया. आई थिंक someone from CRD has suggested my name to someone in Coca-Cola, and he called me, and that way the things happened. ठीक है, तो it was great, and मतलब ऐसे ज्वाइनिंग हुआ, and then the role, if you want to know more about the role, Yes, sir. so it was kind of techno commercial role. So in techno commercial, uh, though NIFTEM also claimed that we are a techno manager, so that role was, I guess it was a very suitable role for us as a food technologist coming from NIFTEM. So that is more or less kind of overall operation management role. So in that you are taking care of quality, production, and company, whatever compliance is there from company point of view, as well as you are also connecting through other supply chain functions, like you are in connect with sales team also, that you have to dispatch this much amount of goods from factory to like distributor location, and also you are also involved in this RMPM, raw material and packaging material procurement part. So you are kind of one point contact for your particular factory. So I was located in South India, and I was managing two of the Coca-Cola co-packer factories. Where in one we are manufacturing Tetra Pak juices, and in another one we are manufacturing this Maja. So it was great time with Coca-Cola, and it was great learning for me. So, sir, then what Yes. interest made you shift from Coca-Cola to Access Development Services? So this is $1 million question, I guess everyone used to ask me. So there is no as such कि ऐसा कुछ रीजन नहीं था. So I am kind of person कि मैं अपने आप को बस इस तरीके से डिफाइन नहीं करता कि I just did food technology and I have to work for food technology only. Or even I will suggest you people and whoever viewer who is watching us live कि अपनी जो मतलब me being a human being, it's not limited to me only doing food related thing. ये तो तब मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई डिड बेसिक एजुकेशन, और जो भी एक होता है बेंचमार्क एजुकेशन जो होता है वो मैंने फूड में करी, बट आई हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग मोर देन दैट. तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि इफ टुमारो आई विल गेट सम अपॉर्चुनिटी इन ऑयल एंड लाइक गैस इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री, and I am getting motivated for that role, and I found my capable of doing that thing, and person sitting next to me who is hiring me, if he found that I can do that job, then I am ready to go with aviation or even oil and gas and whatever it is. ठीक है. So this thing I used to say many of my friends and even some juniors who used to call me कि भाई अपने आप को फूड से आप डेफिनेटली ट्राई करो अगर बहुत इंटरेस्ट है तो. अगर इससे भी ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट है तो यू हैव टू लुक फॉर दैट थिंग, बिकॉज लाइफ ऐसे आप इवन मैं चलो या कोई भी आप फूड में करते जाओ 10 साल करो, लेकिन नेक्स्ट 11th ईयर में भी आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाओ. इफ यू हैव दैट क्वालिटी, यू मे बी सम कुछ और ही बन जाओ, किसी में डायरेक्टर बन जाओ किसी दूसरे कंपनी में. So there is no limitation what I used to see from my perspective for any human being. और मुझे इस कंपनी में जाने का ऐसा रीजन रहा कि I thought कि this is more or less related to food and I have some soft corner from that time कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने फार्मर्स के लिए. So in that way I got motivated और मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, and it's kind of try कि भाई, और हम इस एज में हैं अभी, वी आर नॉट 35 और 40 years old कि भाई हमें सेटल होना है. वी हैव और एक ये भी होता है कि हम चीजें करके देखें
तब हमें पता चलता है एक्चुअल में कहाँ, क्योंकि इफ यू ट्राई 4 5 6 एंड देन फिगर आउट कि भाई मेरे लिए कौन सी अच्छी चीज है और आगे बढ़ना। सो इन दिस इज माय अप्रोच कि मुझे एटलीस्ट 30 35 मुझे 4 5 ऐसे शेयर देख लेना चाहिए जो मुझे लगता है मुझे इसमें काम करना है, एंड देन आई विल फिगर इट आउट कि किसमें अब आगे बढ़ना है। दिस इज माय। Yes, sir, that is that you rightly said. One should not restrict itself to one thing, like try various things where you can find your interest. So what is basically Absolutely. so what is basically access development services and what you do there? What is your role and how it is like different or similar to the one you were doing previously? Okay. So Access Development Services is a NGO, and it's been more than 17 and 18 years that they are working in livelihoods, like doing livelihoods projects. They are mostly earlier. They are mostly in like handicraft and some other things, like artisan related thing. But now they are slowly coming into, when this FPO model is started in India, so they are coming into farm sector also. So right now I'm like my role is mostly in food technology itself. Like I'm working as a technical manager for food and agri business. Okay. So in this I have around 50 projects in different locations in Rajasthan, Odisha and West Bengal. And those projects are like we are developing women-led enterprise, and which is related to food processing. Like if some region has more spices, then we are trying to set up a small plant, and those plants are plant budget is ranges from 20 lakhs to 30 lakhs. तो इस 20 से 30 लाख के बीच में हमें क्या करना है, एक छोटे से प्लांट डालना है, एंड वी हैव टू डेवलप देयर ओन ब्रांड, and then also the marketing also. So in that way we are trying to make women-led enterprise. Yes, that's really great. Like you shifted from a corporate to an NGO and working for the benefit of the society. That's really great. And so like, what were all the challenges you faced? Like maybe when you were like quitting your job at Coca-Cola, or the time span you said like 2 3 months where you didn't have any job. So like, what all were the challenges you faced? Okay, so this is not after Coca-Cola, it's before Coca-Cola that I spent 2 3 months. So the challenges what I found, see, so there are, when we say challenges, it's all related to the person. It's not related to, क्योंकि जब चैलेंज आता है देन इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर हैंडलिंग. अब आप गलत तरीके से उसको हैंडल करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड इफ यू आर मैनेजिंग इट स्मार्टली देन इट मे सॉल्व इन वेरी इजी वे. तो जो चैलेंजेज मैं ये कहता हूँ कि सी, एंड इट्स मोस्टली फॉर people like you who will be coming out from college by next year and those who are coming इस साल आते होंगे, तो हमें कभी ना अभी इस तरीके से कभी नहीं सोचना, बिकॉज it's that to have good like very big ambition and very big thought कि भाई ऐसे करना है, but it starts from scratch. ऐसा नहीं कि हम सीधे जाके एकदम कॉर्पोरेट में बैठ के और डिसीजन देने लगेंगे. So we should have ऐसे माइंडसेट होके हमें आना है, लाइक यू पीपल एंड एनीवन, कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो फर्स्ट योर प्रायोरिटी मस्ट बी टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क. बिकॉज होता क्या है कि हम फूड टेक्नोलॉजी हमने पढ़ तो लिया है, बट व्हेन यू कम टू द रियल लाइफ एंड इंडस्ट्रियल सेटअप, तो उसमें आपको बस यही लगेगा कि हमने ये सुना था, आप डिटेल में नहीं जान रहे होते हो, नाइदर मी. ठीक है, जब ऐसा पाता है तो आपको लगता है हाँ ऐसा तो होता है, एंड देन यू रिमेम्बर कि 7 स्टेप्स होते हैं, एंड बट यू डोंट नो कि भाई 7 स्टेप के जो डिटेल में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेटअप में उस 7 स्टेप को कैसे फॉलो करते हैं. तो यही होता है कि जब आप आते हो तो पहले आपको डिटेल में जो रियलिटी में क्या होता है वो सीखना होता है. व्हेन यू गॉट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज कि भाई चीजें अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हो, देन कई चीजें आती हैं, देन ऑफिस पॉलिटिक्स भी रहता है, देन एक जनरल वो भी रहता है कि भाई आपके कॉमन सेंस कैसे चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो. एंड व्हाट आई फाउंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस टिल नाउ कि जो आपका नॉलेज है वो तो चलो एक बहुत बड़ा हेल्प है ही, बट इन रियल वर्ल्ड एंड इंडस्ट्री और इवन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आपका कॉमन सेंस सबसे ज्यादा
मायने रखता है कि आप कैसे चीज लोगों को हैंडल कर रहे हो। द पीपल मैनेजमेंट स्किल इज टॉप इन एनी स्किल टिल यू आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च, और ऐसी चीज आप नहीं कर रहे हो कि एकदम नॉलेज लगा के खोज कर रहे हो, मतलब एक कुछ नई ही चीज बना रहे हो। अदरवाइज सबसे बड़ी आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल सबसे ज्यादा काम आती है। एंड आई सजेस्ट each and everyone there in NIFTEM, they should work on their communication skills and also some other skills like, and nowadays some IT के भी चीजें अगर आप जान लो अच्छे से, काइंड लाइक एक्सेल से अच्छा आप बनाना जान लो, टैबलू, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। यू मस्ट ट्राई ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ये आपको थोड़ा अलग स्टैंड आउट करती हैं। आप रिपोर्ट बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो इट मस्ट स्टैंड आउट कि भाई आप एक अच्छे कॉलेज से आ रहे हो। Yes, so these sir. are my suggestions. Yes. So like at last, like I would like to ask, so is there any advice like which you should have, like ऐसा होता है ना कि अगर हमें ये पहले advice मिल गई होगी तो maybe I have done things differently. So what's that advice that helped you? Okay. So that I think I covered little bit in our previous discussion. तो पहला तो what I want to say to each and everyone कि भाई आप ना हरदम कॉन्फिडेंट रहो। मतलब सामने आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके अंदर ऐसी मतलब एनर्जी और ऐसा ऑरा आना चाहिए कि हो जाएगा आपसे। मतलब सामने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे पे ही झलक रहा है, नहीं हो पाएगा। बिकॉज आज इवन इफ यू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, होता क्या है, हम पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं और वो लिखता है 3 से 4 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एंड दिस एंड दैट, हम उसी को पढ़ के एंड देन वी डिसाइड कि भाई अप्लाई नहीं करेंगे। बट आपको ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ जब मेरे के सामने कोई ऐसा जॉब आता है, कुछ आता है कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड मी बीइंग एट 4 इयर्स और 5 इयर्स जो भी, तो मैं उसको भी अप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो काम वो है मैं कर सकता हूँ। तो इन दैट वे यू शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस अबाउट एनीथिंग व्हाट यू आर परसुइंग, एंड ऑल्सो कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को लिमिट मत बनाओ फूड और एनीथिंग से। आप अपने पैशन पे, पैशन इन द सेंस इंटरेस्ट पे जाओ, ठीक है, किस चीज को करने में अच्छा लगता है वो चीज करो, ठीक है। एंड इस चीज पे भी ज्यादा मतलब एकदम उलझ के मत रह जाना कि जनरली होता क्या है, हम 3rd ईयर 4th ईयर में आके यही इंटर्नशिप्स पे और प्लेसमेंट पे ही उलझ के रह जाते हैं एंड देन अपने आप को डिमोटिवेटेड कर लेते हैं। वो एंड ऑफ लाइफ नहीं, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला और अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिली तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर इंटर्नशिप आप नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा अपने अंदर झांक के देखो कि क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। एंड जनरली जूनियर्स यूज टू कॉल सीनियर्स एंड समवन एल्स कि भाई इंटर्नशिप लगा दो। तो आई ऑल्सो अपोज दिस आइडिया ऑल्सो कि भाई आप ये बताओ कि you can call if there is vacancy in my organization, I am there, then you may call, but ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कि मुझे कॉल करके सर कोका कोला में लगा दो। why not you directly go and ask for that, because you are ready to do that job at free of cost। and जब आप फ्री में करने के लिए कोई काम किसी से नहीं ले पा रहे हो तो आगे क्या करोगे? दिस इज माई थॉट प्रोसेस। डोंट टेक इट नेगेटिव वे, बट व्हाट आई एम टेलिंग कि आपके पास इतना वो होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस और इतना परसिवरेंस होना चाहिए कि आप जाके छीन के लाओ सामने से। आप ये दिखाओ कि भाई मैं ही बस कर पाऊंगा इस काम को और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। so that spirit you should have to have. Yes, so those were definitely very like motivating words. So thank you for being with us today. And there was like a great learning from your journey as well as your words. They were like really wise. Thank you so much for inviting me, and I hope my learnings and my thought may ignite some energy to some juniors and the other viewers who are watching us live here. So okay, fine, thank you once again. Thank you, sir, for giving us your time. That was like really grateful.